दिस जो भी ड्यूरिंग जहां पर सिंथेसाइजिंग H प्लस आयन या O आयन और जो भी वाटर सिंथेसाइजिंग हो रहा है, देयर विल बी रेडॉक्स रिएक्शन विल बी अकर आउट. रेडॉक्स रिएक्शन जो भी आपका इनिशियल सबस्ट्रेट टू एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज जो भी आपका रिवर्स डायरेक्ट, और दैट रिएक्शन जो भी फॉरगेट दिस वन जिस फंक्शन जहां पर भी ऑक्सीजन लेवल्ड हो रहा है, रिएक्टेंट विल बी 6CO2 to 12H2, 6CO2 and 12H2O जो भी there with 12H2O to break down and product form as 6 water molecule. That 6CO2 and that form synthesized direct that in as a oxygen isotope oxygen 18 जो अपना ट्रेसर है, as a water as a tracer we can use for as a identical content compound and produce the glucose 6 per mole as per according to von Neal hypothesis. Initial reaction आपकी is it got it? Yes or no? Yes or no? 6CO2 and H2O glucose and water बन रहा है. Water जो according to von Neal hypothesis ऑक्सीजन जो आपका एज ए ट्रेसर दैट एंड यूटिलाइज एज प्रोडक्ट अदर, और वहां पर जो भी आपका बॉन्डिंग फॉर्म है अदर हैव बीन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग फॉर्म, इट इज अनदर एस्पेक्ट इक्वल दैट इज अनइक्वल शेयरिंग मॉलिक्यूल आइदर इन अनइक्वल शेयरिंग जो भी आपका केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस व्हाट एवर विल बी टेक्स प्लेस देयर विल बी कन्वर्टेड जहां पर भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है अनइक्वल टू इक्वल से पोलर कोवलेंट बॉन्ड टू नॉन पोलर कोवलेंट, पोलर से नॉन पोलर इट मे बी वाटर विल बी एक लाइन में जस्ट हाईलाइटेड एंड रिटन दैट वाटर इज स्प्लिट होने का तो क्या होगा H प्लस एंड हाफ O2 ओके स्प्लिट हुआ तो ट्रांसफर H प्लस वाटर से H plus ion will be transferred and to carbon dioxide and reduce the sugar, और then वहां पर जो भी reduce हो रहा है that is are utilize the light energy or as a potential energy or movement of electron will be, और जहां पे converted product जो बन रहा है वहां पर as a oxygen 18 as a tracer will be unequal sharing to equal sharing and oxygen 18 as a be help out to the synthesize the product. All this with that converting जो भी आपका light first chemical energy to light to chemical energy, during that is a incorporate the carbon dioxide जो भी आपका incorporate एक line just we can as Kelvin क्या है तो incorporate the और कार्बन डाइऑक्साइड एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यूज द एनर्जी फ्रॉम आइदर वेरियस सोर्स लाइट रिएक्शन एंड टू द न्यू कार्बन फिक्सेशन रिडक्शन एंड ऑन दैट वी कैन सिंथेसाइज दैट प्रोडक्ट. तो व्हेन इस पे अकर तो दिस इज आर अकर इन द मेसोफिल सेल कंटेनिंग H प्लस आयन गेटेड चैनल जो अभी आपका H प्लस आयन स्टोमेटा थ्रू द एब्जॉर्ब द वाटर जो भी आपका रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है वहां से एब्जॉर्ब होके दैट इज आर इन क्लोरोफिल थाइलोकॉइड में से एंड देन ट्रांसफर द वेरियस इलेक्ट्रॉन अनइक्वल शेयरिंग टू इक्वल शेयरिंग पोलर नॉन कोवलेंट बॉन्ड टू कोवलेंट बॉन्ड अनपोलर टू पोलर में जहां इनइक्वल से इक्वल में तो वेरियस हाइड्रोजन आयन विल बी रिलीज आउट दैट हाइड्रोजन आयन और जो भी ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर टू NADP to form the NADPH as electron for or to generate the various ATP reaction or photophosphorylation of Kelvin cycle will be occur. How does it occur? So that is our in form of
magnetic spectrum that light will be, letters will be, and through that occur the यहाँ पर थाइलोकॉइड्स. थाइलोकॉइड्स कहाँ है? मिजोफिल सेल, जहां पे स्टोमेटा और H प्लस आयन और लिबरेट द ऑक्सीजन. यहां पर जो लिबरेट द ऑक्सीजन हुआ है, दैट इज आर दिस वन एज ए ट्रेसर अकॉर्डिंग टू वॉन नील हाइपोथेसिस. ऑक्सीजन 18 as a tracer and to act as a NADPH2 CH2 and to synthesize, release carbon fixation reduction on reaction will be occur out and produce the sugar. Light या dark reaction. Is it clear? Yes or no? नींद तो नहीं आ रही है? I think it's be most of it's be point is be knowing, you are all are knowing, some of it be, but that is a net CSIR जो भी है same is be as a basic fundamental, but that point जो भी है आपको उसमें से capture करना है one point. कहाँ से question trick हो सकता है, like oxygen tracer, like as a Neal hypothesis reaction, chemical reactions, root से एब्जॉर्बिंग हो रहा है तो रूट में भी टैप और ब्रांचिंग रूट. लीफ, तो लीफ में मेसोफिल सेल्स, हाउ इज बी ओपन द स्टोमेटा एंड हाउ इज द ओपन द स्टोमेटा, क्लोज द स्टोमेटा, दैट ऑल दैट डूइंग दैट ईच रिएक्शन के पीछे एक मैकेनिज्म आर एक्टेड और दैट विल बी इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर. जो भी आपका कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन मेजरली carbon dioxide to organic molecule and then will be new carbon, that is a जो भी आपका carbon dioxide है that is a reduction होगा and that is a be NADPH and ATP from light cycle to from during light reaction uses of solar energy of ATP and NADPH. Is it uses of solar energy? तो थाइलोकॉइड जो है आपका इट इज अ लाइट टू केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है. एटीपी टू एटीपी एंड वेरियस एनर्जी कैरियर मोलिक्यूल NADPH और ऑल दैट. लाइट एनर्जी कौन सा हुआ? तो एज ए यदि सिंपल एज कंसेप्ट वी आर बी सीइंग दैट एज पर तो प्रिज्म है, यहां से आपकी लाइट पास होती है एंड पास होने के बाद वेरियस लाइटेड विल बी डिफ्रेक्टेड. तो सेम इज द सनलाइट जो है दैट इज अ सनलाइट एज अ नेचुरल सोर्स. सनलाइट विल बी कैप्चर द एंड लाइट सोर्सेस थ्रू एंड दैट इज एज ए फॉर्म ऑफ वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट जो है आपका कहां से आ रही है? तो आइदर आरटी इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल, दैट इज अ लाइट एज ए नेचुरल सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से थ्रू द कैप्चर कर रहा है दैट इज एक स्पेसिफिक लेंथ पे मेजर कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट, जिसको आप कहते हो P680 एंड P700 नैनोमीटर, PS1 and PS2, for which base we are become differentiated location of thylakoid या location of band. तो मोस्टली व्हाट यू कैन राइट, PS1 और PS2 को आप डिफ्रेंशिएटेड किसके बेस पे करोगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट लेवल पे. दैट एनर्जी हार्वेस्टिंग, कहां से आपकी एनर्जी आ रही है? PS1, so that is a distance between the various waves, or that in either electromagnetic, or that is it may be range nanometer to radio waves where be absorbed in traveling. Whatever जो भी लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है इट इज अ शॉर्टर वेवलेंथ, जो भी आपका इन फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, is the highest energy sources to lowest energy source. highest to lowest energy source में 380 to 750 नैनोमीटर पे 680
nanometer to 700 nanometer पे it may be light will be absorbed in the that light जो भी आपका एनर्जी सोर्सेस एब्जॉर्ब हो रही है it is a travel the waves and a photon as a H plus particle as a आपका object where we work as a tangential object where we work and fixed quantity to the energy where we utilize most of energy जो भी आपका package amount में जो भी photon inversely to wavelength where we work करेगा it is shorter energy होगी तो it is a higher wavelength होगा higher wavelength होगी तो shorter है daylight day and night plant will be growing concept will be based on the this one that is our shorter length or full and that is our depend on the two parameter atmosphere and temperature gradient atmosphere that is a selective that is a dose quantity or light will be significantly pass cold condition it form up as a some plant suppose stress condition हम कहते हैं abiotic and biotic various external factor will be applied like light some plant will be growing that light पे grow रहे some plant will be dark में that is a यदि मैं higher amount में उसको light wavelength करूँ so it may be less growth है lower amount में it may be different है in same is be thermic conditions पे cold condition पे stress यदि water deficiently या cold condition that is are all in case in cold environment यदि cold environment है so that is are in plant containing FFA amount will be present starch जो है आपका that is a secondary product जो है that's a unsaturated fatty acid के कारण it may be present cold environment will be harnessing cold due to जो भी आपका emitting the significant unsaturated fatty acid के कारण cold environment में it may be plant will be longer growth या I think it's all not knowing that. I think all are this is our concept will be occur based on the spectrophotometric concept during concept और जहाँ पे भी आपका photon H plus ion है it is a capture the energy source and transferring the energy into the various H plus ATP to NADPH form जो भी आपका it form of which form will be to any thylakoid molecule या थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एंड along with that various other molecule are acting as like protein and organic molecule all that root are synthesizing आपका हार्मोन synthesizing कर रहा that is hormone that is called as a phytohormone pin protein that is the establishment of ऑक्सीजन जो एपिकल डोमेन्स जो है या पोलर ट्रांसपोर्ट टू द वन से रूट टू अदर स्टेम्स वेरियस अदर प्रोटीन आर इन्वॉल्व टू द स्मॉलर ऑर्गेनिक इन्वॉल्व इनटू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड अदर स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू जो भी आपका एंजाइम्स सॉरी हार्मोन्स हैं ऑक्सीजन साइटोकाइन जिम्बर्लिक एसिड ऑक्सीजन में इट इज अ पिन प्रोटीन आर इन्वॉल्व जहां पे भी आपका पोलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पोलर ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन को वहां पे ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए फोटो सिस्टम जो भी आपका है वहां पर एंटीना कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म आउट जहां पे भी जो रिएक्शन जहां पर कैरीड आउट हो रही है इलेक्ट्रॉन इलेक्सेप्टर टू of various pigment molecule will be say A, B, D, E, all that, and that carotenoids are all are responsible to the during photosynthesis. Any antenna molecule in containing जो भी आपका energy source harvesting complex है NHC
H प्लस आयन, तो दैट ट्रांसमिट हो रहा है एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल एज ए रिएक्शन सेंटर, जहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू रिमूव द excited electron stage and this will be start the light reaction. कहां पर स्टार्ट है, तो जहां पर भी आपका वेरियस प्रोटीन और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंटीनास से हुई है, तो वेयर विल बी स्टार्ट द रिएक्शन, तो जहां पर भी रिमूव द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर टू क्लोरोफिल ए. Sir, in bacteria and plants, what is the difference, basic difference between the photosynthesis process and which is much efficient than another one? In plant is be much efficient. In bacteria that is be some H plus ion या H plus sodium potassium ion, जो भी आपका सोडियम आयन है, that will be polar transport system से through that capture the energy. So in bacteria H plus ion जो भी आपका है वहाँ पे less energy harvesting complex, और here will be plant will be primary electron acceptor complex will be synthesized, or as a chloroplast as a light harvesting unit where be used as a plant and photosystem. But sir, if you talk about this chloroplast and bacterial structure and mechanism, then rhodopsin itself can do all the thing. And, in chloroplast, so many molecules are involved, and the light when comes to one center, it will transmit to the reaction center. So structurally, we can't say that. Structurally, which is much favorable that to construct a big structure, which ultimately do photosynthesis process and energy generation, or the one simple single structure or protein present at a membrane, and that can do the whole process. That is a rhodopsin is one type of pigment molecule, okay, and it is a light harvesting complex, and that we utilize the one favorable condition in a bacterial bacteria, or that we can in case of light senses, light जब आपका light external factor जो भी आपका apply करो, or as a light senses, so that time as a wavelength sensor, that time will be senses to the during photo. Here will be that is be chlorophotosynthesis reaction center as a chlorophyll as a natural energy source है, जो भी आपका visible light source है, through the H plus ion as a antenna complex used as a light harvesting unit where we function as a during photosynthesis process. Is it clear? In PS टेस्ट लेवल, हाँ बस थोड़ा सा तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लूँगा, तो एना પછી ટેસ્ટ લઈ લો. ઓકે હા, તો આ લાસ્ટ સ્લાઇડ કરીને પછી હા મેં ઓકે. During photosynthesis system, that will be two reactions will be photosystem 1 and photosystem 2. Various visible light will be occur 700 nanometer maximum absorption peak, and reaction will be the absorption spectra associated with ATP and NADPH. So various absorption rate and generated to various reaction center to produce the photosynthesis. So during this ATP through the Calvin cycles, all that whatever जो भी आपकी steps process will be occur out in that in stroma, in thylakoid membrane, in thylakoid space, जो भी आपका stroma है there will be occur that stroma first light energy जो भी आपका PS2 to energy synthesize the photocell lysis process है, half H2 or H plus ion to form the cytochrome complex and synthesize the PS1, and then we can enter to the Calvin cycle and synthesizing the ATP synthesis process and various secondary product.
that we can let us we can this first we can as a discuss that question paper all that we can or then we can